Jai Shri Hari, welcome. Good evening. Are you all able to hear Shri me? Hari, welcome. Good evening. Are you all able to hear me and see me Are you clearly? all able to? Okay. So, welcome everyone. My name is Vikram Shastri and I serve Vedic Sadhana Foundation as its CEO, COO. Sorry, gala mein kuch kuch. So, you need to kindly excuse me today a little bit. I hope my audio is coming through. Yes, I see your comments. Thank you so much. Welcome on this auspicious, heralding the auspicious Amavasya tomorrow along with the Gupt Navratri. We are in here for a special session. So, I believe many of you are joining us, have joined us earlier on different sessions, and some of you are new. So, just in the interest of everybody, we will have a quick introduction about who we are, and then we will go on to today's session. So, just if I may know, how is the for the people who are using the Tantra Sadhana app, how is the journey going? If it's going well for you, you're doing the rituals and the sadhanas, give us a on in comments. I will be able to see it. And of course, those of you who are new, you will get to know all about the app in just a few minutes. Great. Excellent. Thank you so much for your kindness. Really, it's because of your support we are able to do what we are able to do. Without further ado, let me take you through the session. Just let me share my screen and off we go. So, welcome to Magh Gupt Navratri. Time, and we are heralding this, and it's an important time. How important it is, what is it about, we will learn in today's session very quickly. What will be the agenda is this. I'll quickly introduce a little bit about VSF. Swami Ji, Om Swami, who is the founder of VSF and the Tantra Sadhana app, will importantly understand, will allow Mansi Ji, who is the senior sadhak of VSF, to take us through what is the significance of Magh Gupt Navratri. How many Gupt Navratris are there, and what is so special about this one? And who are the Das Mahavidyas? We have heard this earlier if you have attended earlier sessions, and yet there will be something new for you for sure. And importantly, what is a Dhyan Shlok? When we were building the app and Swamiji gave us the Dhyan Shloks of the Dashma Vidyas, it was not very clear to me as to what is a Dhyan Shlok, how do you practice a Dhyan Shlok, is it like a mantra, are you supposed to simply listen to it, what is the impact really, why not do a mantra itself? So all of this will be clear today, and importantly focusing on how to do the correct practice for taking doing it efficiently in the way it is meant to be done. That's what we will be hearing all about, where, why, and how to perform the dhyana. And of course, we'll end with whatever instructions we can follow during these 10 days that we can take on, and have a short Q&A session. You're welcome to put on your questions in the chat. Request you to put it on in the Q&A session so that Mansi ji can answer all your queries. Uh, well, let's get started with a quick introduction about who we are. As I said, I serve Vedic Sadhana Foundation. We are a non-profit, and our aim, we are founded by Sri Om Swamiji, Swamiji as we call him affectionately, and we exist for only one reason: to revive the Vedic glory of ancient India. What does that mean? What that means is simple. There are Vedic practices which, when we probably see some practices in our homes, in our parents or grandparents performing them, and the idea is to revive these Vedic practices authentically in the right way to do them, answering the questions of how we do it, why we do it, and in the comfort of our phones through apps and technology. So that's why we exist, to revive these practices and give it in the comfort of our hands. That is the vision for VSF as set by our founder, Om Swamiji. And thanks to people like you, we have been able to connect with and impact 2 million plus sadhaks around the globe who are performing these rituals on a daily basis. 18 million plus Vedic rituals have been performed, be it Abhishekam, Yagya, mantra chanting, sadhanas, and so on. And our aim
is to reach every single person in the country and beyond. हर घर में साधना होना चाहिए. हर घर sadhana is our tagline, and our aim is to make this happen with your support. As I said, if at all you are new and you don't know who Om Swami Ji is, he is our founder, a prolific author who has written 17 plus books. Earlier on, he has founded multiple companies, serial entrepreneur as they call it, and an MBA by graduate. He renounced his wealth, went up the Himalayas to seek his truth. Many of us know his story and have read it in his memoirs. If you have not, I would urge you to pick a copy. He has only done 22,000 plus hours of meditation, peaking every day with 22 hours per day of meditation, doing with quality, mind you. So, and as I said, 17 plus books of meditation. There is a typo there, it says 15, it's 17. His vision is to revive Vedic practices and, make us connect with our roots and also, strengthen ourselves from within. So, that's who he is. And under the umbrella of Vedic Sadhana Foundation, we have many apps. One of them being the Tantra Sadhana app, which is what many of us are using for and will be using in this Gupt Navratri as well. What is the Tantra Sadhana app? It's an app, which means it's a digital medium, but importantly, it allows us to practice Divyachar worship. As many of us know, Divyachar is one of the highest forms of worship where you connect with your Ist in a manasik way, mentally, without having to worry about performing any rituals externally. Clearly, although it would be great to do a yajna, abhishekam in the physical form, and many of us do that as well, being able to do so every day is difficult. Knowing the steps difficult. Learning the mantras hard. Being guided by a guru is also tough when we are doing things on our own. To alleviate all of this, Swamiji has given us the ability to create these apps with his guidance, and all the content that are there in the apps, including Tantra Sadhana app, is his guidance that is there, where he will walk us step by step to perform the rituals so that we can focus on the devotional sentiment of the Divyachar worship. If in case this is new to you, stick on and you will know more about it as we go along. And of course, Tantra Sadhana app is all about performing the esoteric sadhanas of the Das Mahavidyas. Well, many of you know about this, so I won't take much time, but I will quickly show you that small trailer that Swamiji unveiled. She is the mother of the universe, existing even before the beginning of time. She appears to her devotees in 10 forms called the Das Mahavidyas. These are her Tantric forms, each symbolizing an aspect of her energy. Their worship was once performed in secret in jungles, nation grounds, and the wilderness of Mother Nature. A lack of proper spiritual guidance and physical harm were real possibilities for the seeker as they navigated their external and internal worlds, but not anymore. Step into the digital realm of the Das Mahavidyas. Unlock a awakened mantra. Access sacred fire offerings and invoke each Mahavidya with a dedicated spiritual practice. Reveal the wisdom, devotion, and supreme spiritual consciousness that has always existed in you. For every Mahavidya you awaken, you will be granted a boon. Walk the path of Mahavidya Tantra. Its esoteric practices will undo the chains that bind your mind and fill you with untold devotion and bliss. Peace, wealth, happiness, and freedom can be yours. All you need is sincerity. Break free and awaken the divine goddess in all her glory. Well, thank you very much for allowing me to take you through the trailer. If in case you could not hear the audio very clearly, please go to YouTube and the trailer is right there.
without further ado, I'll invite today's host, Mansiji, to come and take us through today's session. Mansiji Jai Shri Hari, welcome. Jai Shri Hari, Vikram, and a very warm welcome to all of you, lovely people who are here with us on a Saturday evening. So, we will quickly begin with an invocation for Guru and Divine Mother. So, if you have a living Guru, you can meditate upon him. If you don't, you can meditate upon Lord Shiva as your Guru. So, put our hands together. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः श्री विद्या शिववाम भाग निलया ह्रीङ्कार मंत्रोज्वला श्रीचक्रा कितबिन्दु मध्यवसति श्रीमत् सभानायिका श्रीमत् षण्मुख विघ्नराज जननी श्रीमत् जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीं मां पीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्ण रत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम्बिका बोलो जगन माता की जय. First of all, I offer my obeisances in the holy feet of my Guru, who for me is verily the Divine Mother and Lord Narayana. Thereafter, I offer my pranams to the Divine in you, with whose grace we are all here in this moment. You know, it's a great blessing that we are here just before the Mauni Amavasya is going to begin. And we have began this session with such a beautiful eulogy to Divine Mother. क्योंकि जब ये मैं चैंट करती हूँ, जब भी मैं स्वामी जी को ये चैंट करते हुए सुनती हूँ, माँ को यहाँ पर सभा नायिका कहा गया है. तो ये जो सभा है जिसमें हम और आप सब बैठे हैं आज माँ के बारे में सुनने के लिए, उनकी चर्चा करने के लिए, उसकी अधिष्ठात्री कौन है? वो माँ स्वयं है. और इतना सुंदर ये वर्णन है कि माँ जब अपने सौम्य स्वरूप में, अपने सौम्य मुस्कान के साथ धीरे धीरे के सभा में चल के आती हैं. इट फील्स whenever I chant this, रक्त चरणामृत, अपने सुंदर pink little feet, you know, she's walking into this very place and she's right there in front of me. She's right here to see what are my kids going to talk about me. So it's a very sweet and divine feeling. And given the fact that today we are going to talk about how to meditate upon her in this blessed period of Magh, I think she's all here. And the joy that is coming in me, I know it's coming from her. So
we will just look very quickly at what is the significance of माँ गुप्त नवरात्रि। तो नवरात्रि जो है वो साल में 4 बार आती है, पर 2 नवरात्रियां ऐसी होती हैं जिनको कि गुप्त कहा गया है। और अभी जो नवरात्रि आने वाली है वो है माघ गुप्त नवरात्रि। जो माघ का समय होता है वो बहुत ही पावरफुल समय माना गया है सनातन धर्म में, क्योंकि ये ही वो समय है जहां पर सारे ऋषि मुनि तप करते थे, अंतर्याग करते थे। अंतर्याग मतलब सारे बाहरी डिस्ट्रैक्शंस से दूर होकर के कहीं कंदरा में बैठ के अपने भीतर की यात्रा प्रारंभ करते थे। तो जो शब्द है माघ, ये इसका एक संस्कृत में मायने होता है बाउंटिफुल, मैग्निफिसेंट, बेनिफिशिएंट। एंड ये वो समय है जहां पर जो माघ नक्षत्र है, दैट द क्लस्टर ऑफ स्टार्स व्हिच इज कॉल्ड माघ, ये जो जो पूर्णिमा अभी आई है उसके सबसे नजदीक है। और मून जो है, जो वो है, जो ग्रह है, वो हमारे इमोशंस को डिक्टेट करता है, प्रोसाइड करता है। तो ये वो समय है जहां इमोशंस को, अपने भाव को, अपने अंदर की सारी ऊर्जा को अंतर्मुखी करने का एक समय है। क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें माघ नक्षत्र रिलेट्स टू रिगेलिया, पावर, रेप्यूटेशन, ऑनर एंड अ टाइम वेयर जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनको रिवेयर करने का एक समय है। जो पुराने जो ट्रेडिशंस हैं, जो जिनको जो जो जीव उनको प्रिजर्व करते हैं, उनको वेनरेट करने का समय है। और ये वो समय है जो बहुत डीपली रिलेट करता है उन आइडेंटिटीज के साथ जो हमारे प्रेजेंट लाइफ और आफ्टर डेथ की जो जर्नी है, व्हेन वी ड्रॉप दिस बॉडी, वो सारा जो एस्पेक्ट है जो गवर्न करता है वो समय, वो यही समय है माघ का। और मौनी अमावस्या जो है उसी से ये समय शुरू होता है, 9 दिन की जो माघ की नवरात्रि है। सो माघ गुप्त नवरात्रि commences from मौनी अमावस्या, and the Vedic sages, um, they would particularly use this period to observe complete silence, verbally and mentally to turn inwards. एक बार एक शिष्य था, वो अपने गुरु के पास जाता है और मौन में बैठ जाता है। और थोड़ी देर के बाद गुरु से पूछते हैं फाइनली कि इतने चुप क्यों हो। तो जो शिष्य है वो कहता है कि आई एम प्रैक्टिसिंग मौन, मैं मौन का अभ्यास कर रहा हूँ। गुरु जो है वो बड़ा एक रहस्यमय मुस्कान देते हैं और कहते हैं कि बट देन व्हाई इज योर माइंड शाउटिंग सो लाउडली। क्योंकि हमको लगता है कि हम मात्र चुप हो जाएंगे, बातें नहीं करेंगे, तो ये दिमाग और ये मन जो है वो भी चुप हो जाएगा। ऐसा होता तो है नहीं। मौन का मतलब है जब भीतर और बाहर दोनों जगह साइलेंस हो। और ये आसान नहीं है, क्योंकि दिमाग जो है, जो माइंड है, कंटिन्यूअसली चैटर करता है। तो वो ये एक समय है जहां पर नेचर आपको अंतर्मुखी होने के लिए, साइलेंस ऑब्जर्व करने के लिए, भीतर और बाहर दोनों तरह से हेल्प करती है। इट इज दैट पीरियड विच एड्स दिस काइंड ऑफ एन इनवर्ड मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन. And that is why it's very important to make use of this time to go inwards and do our sadhana. And why was this period called secret or guhya or gupt? गुप्त का मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ी हम ऐसी कोई चीज करने वाले हैं जिसको कि दुनिया से छुपा करके रखना है। इस प्रैक्टिस को, इस साधना को हमेशा एकांत में किया गया, क्योंकि जब हम एकांत में जाते हैं, जब हम केवल अपने साथ होते हैं, जब अपने आप को वो समय देते हैं जहां हम साइलेंस ऑब्जर्व कर सके, तो ही अंदर का जो हमारे अंदर जब सारा जो मल भरा पड़ा है वो बाहर आता है और हमको एक दिशा मिलती है, हाउ टू वर्क ऑन आवर ओन सेल्व्स। सो आई नो एज पर आवर स्क्रिप्चर्स दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल टाइम, क्योंकि आपको इस कार्य में नेचर का बल मिला हुआ है। अब देखिए ये समय विंटर का है, जहां पर पेड़ पौधे पक्षी सब एक स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी में होते हैं। सो एवरीथिंग इज गोइंग इनटू दिस इनवर्ड विड्रॉल। ये वो समय है जहां उत्तरायण के तरफ
सूर्य की गति बढ़ने वाली है। तो ये बहुत ही, एक धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, तो बहुत ही पावरफुल समय है जिसको कि मिस नहीं करना चाहिए। एज अ साधक इसका पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। कैसे? साधना करके। कैसी साधना? अगर हमको कुछ भी करना नहीं आता है तो भी ये वो समय है जब हम अंतर्मौन होकर के माँ का ध्यान कर सकते हैं। तो ऋषि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ दोनों बहुत ही अकम्प्लिश्ड, सिद्ध, एडेप्ट प्रैक्टिशनर्स हुआ करते थे तंत्र के, और बहुत समय तक दे परफॉर्म्ड a lot of sadhana, but their efforts went in vain. They were not able to receive that desired perfection they were seeking. वो सिद्धि, वो accomplishment वो नहीं मिल पा रही थी. And then they found that there are some times in the year where they could receive this kind of a desired result. Why? Because it is the same period, today's time, what we know as Gupt Navratri, where one can secretly perform the Shakti sadhana and increase their chances of attaining success. Because this is the time they found that nature is also in sync with what you're trying to do by going inwards. And since then, these 9 days came to be devoted as a period of worshipping Mother Goddess and Shakti very privately, quietly, secretly, by turning inwards, अंतर्मुखी होकर के. सो दो जो प्रकट 2 नवरात्रि हैं और उदित 2 नवरात्रि हैं, उनको तो हम जानते हैं, जो चैत्र और शरद में आती हैं। ये जो अलग से 2 नवरात्रि हैं जिनको कि गुप्त कहा गया है, वो माघ और आषाढ़ में आती हैं। माघ का इसीलिए बहुत ज्यादा महत्व है क्योंकि वो समय बाह्य सारे जो हम रिचुअल्स करते हैं, जो कम्युनिटी फेस्टिविटीज होती हैं, उनकी बजाय हम एकांत में बैठ करके केवल मैं हूं, मेरे गुरु हैं और मेरी माँ है। ये वो एक समय है जो अपने आप को देना चाहिए एज अ साधक। अब आगे हम बात करेंगे कि ये 10 महाविद्याएं कौन हैं। सो जैसे कि आपने अभी ट्रेलर में देखा होगा, स्वामी जी ने बताया कि ये कोई अलग अलग 10 देवियां नहीं है। दे आर 10 एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम प्राइमोडियल डिवाइन मदर। आद्या शक्ति के ही 10 स्वरूप हैं जो हमारे ही जीवन में अलग अलग 10 एस्पेक्ट्स को गवर्न करते हैं, 10 एस्पेक्ट्स पे कार्य करते हैं। दे आर नो, दीज आर एनर्जी फॉर्म्स, दे आर मैग्निफिसेंट फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स। तो ये जो माँ के स्वरूप हैं, ये ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत दूर विराजमान है और हमको उनसे कनेक्ट करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। शी इज एक्टिंग इन आवर वेरी डेली लाइव्स। सो डू यू नो हाउ शी एक्ट्स? How she is part of our very own life every single minute. She is closer than the closest. अब मैं ये बोल रही हूँ और आप सोच रहे होंगे भला कैसे? Let's see. सबसे प्रथम महाविद्या है माँ काली। वो क्या है जो हम सबको सबसे ज्यादा हमारे अंदर भय उत्पन्न करता है? कभी सोचा है? The fear of loss, the fear of losing our identity, the fear of losing all the fame and things and material gains that we have acquired over all our period of life with so much hard work, with the fear of loss of our loved ones, the fear of loss of the chances that we get to prove our being, हमारे करियर में, हमारे ऑफिस में, हमारे घरों में। और इतने तरह का भय होता है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। एंड देन ऑफ कोर्स वी ऑल हैव दैट प्राइमल फियर ऑफ डेथ, क्योंकि वो एक अनजान एरिया है, वो एक अननोन जोन है। तो ये इन सारे भयों का निवारण करने वाली कौन है? मां काली। क्योंकि तंत्र कहता है कि मैं अपनी प्रवृत्तियों से, मैं अपनी दुर्बलता से भागूंगा नहीं। जहां मेरी दुर्बलता है मैं वहीं बैठ के आई विल एड्रेस इट हेड ऑन। सो इसलिए एक तंत्र का साधक जो है वो क्या करता है? वो क्रिमेशन ग्राउंड में जाकर के बैठ जाता है। देखूं तो ऐसा क्या है, कितना भय है,
क्या हो जाएगा अगर मैं वहीं पर बैठ करके माँ को पुकारूं, जो कि इस समस्त जगत को चलाने वाली शक्ति। तो जब हम सरेंडर करते हैं, जब हम ये फेथ रखते हैं कि हर चीज से ऊपर वो शक्ति है जो इस केवल मुझे नहीं, इस समस्त ब्रह्मांड को चला रही है, जब हम उनको सरेंडर कर देते हैं तो भय का कहीं स्थान ही नहीं होता। एंड दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एवरी साधक। और ये जो है, इनको 10 महाविद्या क्यों कहा गया है? ये शब्द आता है महा और विद्या, क्योंकि दे आर विजडम गॉडेसेस। इनको हम इसलिए इनका आवाहन नहीं कर रहे कि ये मेरी लाइफ की छोटी मोटी प्रॉब्लम का निवारण कर दें, वो तो हो ही जाएगी, बट these are the forces of the universe which are Brahma Vidyas. They guide us in our daily lives as wisdom, as vivek, as that discerning intelligence to live our life meaningfully with wisdom, with grace. And that's how they operate so closely in a everyday basis, in a day to day life with us. So she is walking in this life with us. तो जहां देखेंगे, इस साधना का सबसे ब्यूटिफुल रिजल्ट ये होता है कि आप जहां देखेंगे वहां आपको माँ ही माँ विराजमान दिखेगी अपने जीवन में, हर क्षेत्र में माँ ही दिखाई देंगी। जब ये एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फियर एंड लस्ट इज एड्रेस्ड, क्योंकि एक नग्न स्त्री में एक भी अगर हम माँ को देख पाए, तो इसीलिए 10 महाविद्या की जो साधना है वो बिल्कुल एक एक चाइल्ड लाइक भाव के साथ की जाती है, जहां हम माँ को पुकार रहे हैं, अपनी माँ को पुकार रहे हैं। वो भले ही इस पूरे ब्रह्मांड की माँ है, पर वो मेरी भी माँ है। तो जब ये भाव प्रबल होता है, जब ये बहुत आपकी चेतना की गहराइयों में बैठ जाए कि जिनको मैं पुकार रहा हूं वो मेरी माँ है, और माँ हमेशा अपने बच्चे का भला ही करती हैं, उसको हर तरह से संपन्न देखना चाहती हैं। फिर आती हैं जो अगली महाविद्या है, वो है माँ तारा। उनको कहा गया है तारिणी, शी इज द सेवियर गॉडेस। तो इस पूरे संसार के प्रपंच से जो पार लगाने वाली जो विद्या है, जो विजडम है, जो शक्ति है, वो है माँ तारा। शी कम्स एज क्लैरिटी। हमारे पास कितने समय ऐसा होता है दिन में जब हम कंफ्यूज होते हैं, जब हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम क्या करें, होता है कि नहीं ऐसा दिन में? तो फिर what is it that we are seeking? We are seeking clarity. We are seeking that sharpened sense of intuition, which allows us to make our life decisions, which allows us to navigate with a sense of absolute clarity कि मुझे ये करना है। मैं जब जब इंसान के पास वो क्लैरिटी होती है, तो उसका सारा एफर्ट उसी गोल को अचीव करने में लग जाता है। एंड दैट इज व्हाट, दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी, दैट काइंड ऑफ इनर वॉइस is Ma Tara. She may not always come as, as a form in our lives, but उनका प्रेजेंस हमको कितने अलग अलग तरह से दिन में फील होता है। जब जब भी आपको लगे कि हम एक कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और आप माँ को पुकारते हैं, एंड शी गाइड्स यू एज दैट इनर वॉइस, जो आपके भीतर अंतर्यामी बन के बैठी है, जिनसे कुछ नहीं छुपा है। आप जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ सोचते हैं, वो जो अंदर बैठ करके एक साक्षी भाव में देख रही है, वो माँ है। और वही आपका मार्गदर्शन भी करती है जब हम उनको पुकारते हैं। वही हमें संसार के हर छोटे बड़े बड़े निर्णय लेने में सहायता करती है। तो जब when we anchor our life and surrender it to that divine force, that higher intelligence, she starts operating in our life in so many million ways. फिर आती हैं सबसे सुंदर स्वरूप माँ का, जो है माँ त्रिपुर सुंदरी। And she helps us to see the beauty in life. She helps us harmonize our energies. तो कितनी बार ऐसा होता है ना कि हमारे अंदर ये जो प्रबल अहम होता है, मैं, कि मैंने ये किया, मैंने ये साधना की, मैं इतने सारे शास्त्रों का ज्ञान रखती हूँ, मैं इतने मंत्र का उच्चारण कर सकती हूँ,
मैंने इतनी लंबी साधना की, इतने करोड़ मंत्र जपे, ये मैं अपने परिवार का ख्याल रखती हूँ, मैं अपने परिवार का भरण पोषण करती हूँ, मैं ऑफिस में फलाना फलाना ओहदे पे हूँ, ये मैं कंटिन्यूअसली जो ये मैं ये जो अहम है, हम इत्येव भवानी जो है, जब माँ को समर्पित हो जाए, दैट सेंस ऑफ डूअरशिप, when it is surrendered to the divine mother, she becomes the beauty in our life, because फिर हम कुछ नहीं कर रहे, करने वाली माँ है, करता सिर्फ एक है, कर्ता पुरुष एक ही है, और वो एनर्जी, वो फोर्स, वो सिर्फ माँ है। जब हम अपना अहम समर्पित कर देते हैं, तो शी कम्स इन आवर लाइफ एज उद्यत भानु सहस्त्राभा, कि इतने इतने सारे मिलियंस ऑफ रेज that are coming from the sun and illuminating our daily lives as prakash, as jnana prakash, as that wisdom, as that knowledge, where we understand that there is no point in having such a big bloated ego. I am very small in the larger scheme of things. And then our problems also become very, very small and petty. हमारा दृष्टिकोण चेंज हो जाता है. The way we look at things change, our perspective changes. And she comes because there are so many areas. हमारे आप जीवन में देखिए कितनी जगह अंधकार फैला है. हर उस अंधकार को दूर करने के लिए सहस्त्र आभा. Why Sahastra? Because in infinite ways she comes as the wisdom to guide and bring that light in our lives. Why? Deva Karya Samudyata. Why? To perform the karyas of devas. And who is that Deva? That Deva is that Daivi Gunam which is inside us. Asuras are also inside us. And devas are also inside us. हम किसको नरिश कर रहे हैं, किसको पुष्ट कर रहे हैं? तो we all know that in a period of 8 minutes, so many millions rays of sunlight come to earth. But do you know that a few of them also go back to the sun? They reflect, they bounce back, they refract, they travel through the cosmos, and they go back to the sun. We are very, very fortunate, because if today we are sitting here trying to commence a journey of self-realization, of self-introspection, to call upon Divine Mother, it is a shower of her grace. जब बिल्कुल बारिश हो रही होती है माँ की कृपा की, तभी हम माँ को पुकार पाने का सामर्थ्य रखते हैं. एक छोटे से क्षण में भी अगर माँ की स्मृति होती है मन में, तो वो माँ का ही बहुत बड़ा अनुग्रह है. एंड शी इज दैट अनुग्रहम, शी इज दैट कृपा हु कम्स फॉर डूइंग द कार्य ऑफ द देवास विद इन अस. The next Vidya that comes is माँ भुवनेश्वरी. तो माँ त्रिपुर सुंदरी के ही स्वरूप से माँ भुवनेश्वरी का प्राकट्य हुआ. भुवन जो शब्द है, that means a world, a realm. And she is the one who is closest to our world. Bhur Bhuva Swaha. She is in this earthly realm. She is in that world where we are moving between the heavenly realm and the earthly realm. And she is in the subtle realms also above the earthly realms. तो 7 भुवन ऊपर और 7 भुवन नीचे, जो कुछ भी इस पूरे ब्रह्मांड में है, वो इस माइक्रोकॉज्म, इस शरीर में भी है. सो मूलाधार से ऊपर 7 वर्ल्ड और मूलाधार के नीचे 7 भुवन, उन सभी की अधिष्ठात्री माँ भुवनेश्वरी हैं. एंड शी इज द वन हु इज नोन एज महामाया. इफ यू रीड द देवी भागवतम, जिनको कि महामाया बोल करके उसमें संबोधित किया गया है, जिनको माँ भगवती के रूप में जिनका आवाहन किया गया है, वो है माँ भुवनेश्वरी. महामाया क्यों? क्योंकि ये जो सारे रेल्म हैं, ये जो सारे भुवन हैं, ये जो सारे जगत हैं, जो सारे लोक हैं, वो एक माया के आवरण के अंदर हैं. आप अगर दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो उसमें मेघा मुनि कहते हैं कि
इस संसार में सबको माया के बहुत गहरे गर्त में गिराया गया है. सो इस माया से ऊपर कौन ले जा सकता है? So the one who shatters all the illusion is Ma Bhuvaneshwari, because she is Mahamaya. And how does she shatter the illusion? In our daily lives, wherever we think that things are permanent, things are not going to change, I know I have this ability, पर शायद कहीं कोई ऐसा ट्रिगर आ जाए जो मेरे को पता चले कि भाई मेरे अंदर ये अभी मेंटल अफ्लिक्शन है. She is the one who makes us realize. And when that happens, she is the one, when she removes that veil of illusion, she allows us to operate in this life with grace, which brings abundance, which brings beauty. And then comes the next Mahavidya as Ma Tripura Bhairavi. When we have this realization, you are just on that threshold. हम बस उस जगह पर होते हैं जहाँ हमारे भीतर, यही यही वो समय है. आप देखिए, जब हम धीरे धीरे शांत होते हैं, अपने भीतर जाते हैं, तो अंदर का सारा गहन मल जो है वो पहले बाहर आता है. वो हम अपनी प्रवृत्तियां देखते हैं, हम अपने चित्त की जो दुर्बलताएं हैं वो देखते हैं. When we see our restive tendencies, our triggers, this requires a fierce transformation. Kabhi kabhi, we all have experienced, we know that there is a certain limitation, but we feel powerless. होता है कि नहीं? मैं जानता हूं कि ये दुर्बलता है मेरे अंदर, पर मैं इसका क्या करूं? अब क्या करूं? तो सबसे अच्छा तरीका है कि माँ, मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं इसको आपको समर्पित कर रहा हूं. जब माँ को समर्पित कर देते हैं, when we surrender to her, she is the one who plucks it out. बिल्कुल जैसे कि एक डॉक्टर होता है. If a doctor has to operate and perform a surgery, he needs to sedate the patient, he needs to cut open the wound, and then he needs to stitch it across back and allow that time to heal. तो वो जो एक कार्य है, बहुत एक सहजता से, बहुत एक प्रेम के साथ, because nothing heals like love, nothing allows us to grow like feeling at home. That feeling at home comes here when Ma Tripur Bhairavi is acting even as that force of dissolution. She dissolves all that impurity, all that we are unable to do by our own self. That is why she comes as fierce transformation. And sometimes that will require us to move out of our comfort zone, to that extra force that is needed. She is that extra force. Then comes Ma Chinnamasta. अब यहां माँ अपने मस्तक को छिन्न करती हैं. She severs her head and she is the one who's holding that severed head in her hand, and she, और उसमें से 3 रुधिर धारा, रक्त की धाराएं निकलती हैं, जो एक माँ के स्वयं मुंह के अंदर जा रही हैं, मुख के अंदर प्रवेश कर रही हैं, और 2 उनके लेफ्ट एंड राइट में जो अटेंडेंट शक्तिज खड़ी हैं, जो कि डाकिनी और वारनिनी है, उनके मुंह में जा रही हैं. तो ये जो स्वरूप है माँ का, देखने से तो बहुत ही उग्र लगता है. वी फील वेरी, दिस सम काइंड ऑफ अ वेरी फियर्स फॉर्म, बट दिस इज द थिंग. ये गूढ़ ज्ञान है, ये ब्रह्म विद्या है. तो सिर्फ एक बाहरी सरफेस अंडरस्टैंडिंग इज नॉट इनफ, which is why a deep dhyanam on her reveals the secret. And what is that secret? ये सर, ये मस्तक क्या है? भगवान शिव ने गणेश जी का सर धड़ से अलग किया. He hacked the head off. Why? Because there was that mal, there was that stubbornness, there was that ego that had to go. Because जब हम अपने अपने इस अहम को इतना बड़ा कर देते हैं, तो बिल्कुल दशानन की तरह 10 सिर हो जाते हैं. उसको हटा करके जब महादेव ने एक एलिफेंट का सर रखा, एलिफेंट्स हेड जो है, हस्ती मुख जो है, वो विजडम को सिग्निफाई करता है. तो व्हेन दिस ईगो, दिस बिग ब्लोटेड ईगो इज hacked off and wisdom dawns, that is how Ma Chinnamasta operates in our lives.
She brings that ability to understand that अपने आप को इतना बड़ा समझने का क्या तात्पर्य है. Sometimes we are so adamant, my way or headway, highway. Why? Because the ego is so big. It refuses to listen to any other being. जब हम अपनी छोटी छोटी चीजों को गांठ बांध करके रख लेते हैं, क्यों? Because the ego is a roadblock. It's not allowing us to see things with wisdom, with that vivek. और हमेशा दूसरे को दोषी मानना, ये एक्सेप्टेंस नहीं आती है कि देखो, वी आर वेरी स्मॉल इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, कि हम बहुत एक छोटे से प्राणी हैं इस पूरे अर्थ के ऊपर, और ये अर्थ बहुत एक छोटा सा ग्रह है इस ब्रह्मांड के अंदर, और ये ब्रह्मांड मल्टीवर्स के अंदर एक बहुत छोटा सा यूनिवर्स है. सो मदर डिवाइन्स एक्सपेंस इज इनफाइनाइट and we are nobody in the larger scheme of things. This ego dies down, and that is the wisdom Ma Chinnamasta brings. This comes with a lot of self reflection, and it is a lot of work on our own selves. क्योंकि जैसे होता है ना कि एक मिरर है, उस पे बहुत सारी धूल लगी है, तो हम अपना स्वरूप उसमें नहीं देख पाते. ये वो यात्रा है जहां हम धीरे धीरे करके उन परतों को हटाते हैं. दैट दिस साधना इज पाथ ऑफ सेल्फ प्योरिफिकेशन. धीरे धीरे जब वो लेयर्स हटती हैं, तो हमको हमारा स्वरूप दिखाई देता है. और वो स्वरूप क्या है? वो वही स्वरूप है जो उन माँ का है जिनको हम पुकार रहे हैं. वी हैव कम फ्रॉम हर. तंत्र सेज, इफ आई हैव कम फ्रॉम दैट डिवाइन, there is a possibility to discover that divine within us. And this is the path of that self-discovery. जो अगली महाविद्या आती हैं, वो है माँ धूमावती. So haven't we all experienced this state of inner trauma, of unhealed aspects of our lives? जहां एक छोटा सा कोई इंसिडेंट हो जाए और हमको बहुत तकलीफ होती है. एंड दीज ट्रॉमास मे बी ऑफ दिस लाइफ टाइम, इट मे बी ऑफ मेनी मेनी प्रीवियस लाइफ टाइम्स. तो माँ धूमावती का जो स्वरूप है, दैट कम्स एज दैट लविंग, कंपैशनेट, हीलिंग एनर्जी. जहां एक कोई नहीं है, माँ एकाकिनी के रूप में है. जहां और कोई भी नहीं है, वहां भी माँ आपके साथ है. जहां आपको लगता है कि मैं अकेला पड़ गया हूं, उसने मेरे साथ ये किया, उसने वो किया, मेरा ये नहीं हुआ, उसने ऐसे बर्ताव किया. ये जो हम गांठे और गांठों पे गांठे बांध करके रखते हैं ना जीवन में, दिस इनएबिलिटी टू लेट लूज, दिस इनएबिलिटी टू लेट गो, हम इतना क्लिंग करके, इतना जोर से पकड़ के रखते हैं कुछ चीजों को अपने लाइफ में, कि चाह कर भी हम उसको छोड़ नहीं पाते. And that is what does not allow us to heal. वो हीलिंग एनर्जी, वो प्रेम का वो अथाह सागर, जहां माँ आपको, आप जैसे हैं वैसा स्वीकार करते हुए, शी अलाउज यू टू स्टेप बैक इनटू दैट साइलेंस, इनटू दैट स्पेस ऑफ नॉन डूइंग एनीथिंग. माँ के देखिए रथ के पास कोई चलाने वाला, रथ को खींचने वाला ना कोई वहां पर यंत्र है, ना कोई और एनिमल है, कुछ नहीं है जो कि उस रथ को खींचे. When we feel stuck in life, when we feel कि सब कुछ रुक गया है, we have hit our rock bottom, वहां पर भी माँ अकेले नहीं छोड़ती. And every suffering comes with the ability to allow us to grow, to allow us to evolve as a consciousness, to break the karmic cycles. क्योंकि आज इसने ये किया, मैं ये करूंगा, अब फिर उसने वो बोला, देखो अब मैं ये करूंगा. तो हम जो ये गांठे, जो ये रिजेंटमेंट रखते हैं, उससे सिर्फ कर्म जो है वो गोल 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 एक पैटर्न की तरह, एक साइकिल की तरह नेवर एंडिंग घूमता रहता है. उसको ब्रेक कैसे करेंगे? उसने रिएक्ट किया, उसने जो किया उसका कर्म. पर मैं लेट गो करूं, मैं फॉरगिव करूं, मैं उस चीज से आगे बढ़ जाऊं. वो एबिलिटी, वो स्ट्रेंथ, वो फोर्स कहाँ से आएगा? वो माँ धूमावती से आता है, जब वो हमको हील करती हैं, जब वो हमको उन चीजों को छोड़ देने की क्षमता देती हैं जो कि केवल और केवल तकलीफ
का कारण है. Because pain is inevitable, but suffering is not. That is what Swami Ji says. यहाँ पर हम पूरा अपना एक पीड़ा का बखेड़ा लेकर के खोल के बैठ जाए और उसको छोड़े नहीं, तो हम तो वहीं अटके रहेंगे. उस अटकाव से हमको वापस जीवन की ओर, उस सुंदरता की ओर कौन लेकर के जाए? वो फोर्स कौन है? वो है माँ धूमावती. माँ धूमावती जब हमको हील कर देती हैं, जो अगला स्वरूप महाविद्या का प्रकट होता है, वो है माँ बगलामुखी. She comes as that Shakti of restraint. She comes as that power to arrest what is not good for us. So, what is not good for us? Can you just think for a moment what causes all the conflicts majorly in our lives? The way we react, the way we utter words in a state of fury, in our default state of being, जो एक impulsive reaction होता है, जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, that is the cause of 95% conflicts in our life. And she comes as that power of restraint, जो कि हमको mindfully कैसे अपने विचार, अपने वाणी और अपने एक्शंस को कंट्रोल करना है. हम वही बोले जो कि हमारे लिए और हमारे जो आसपास हैं उनके लिए शुभ हो, श्रेयस्कर हो, उनका कुछ उद्धार करे. हमारे मुंह से ऐसा कुछ नहीं निकले जो किसी का भी कोई लाभ नहीं कर रहा हो. लेकिन ये होता नहीं है. उस समय जो मुंह में आए, जो दिमाग में आए, वो हम कर देते हैं, बोल देते हैं, एंड देन वी रिपेंट इट लेटर. सो दिस पावर ऑफ रिस्ट्रेन comes from Ma Bagalamukhi, where she makes us mindful of our speech, of our actions, of our thoughts. And that is why this wisdom is slowly dawning as we progress in sadhana. And when that happens, we start to see things with an eye for creativity. फिर वो जो हमारी एनर्जी है, जो ये सारे चीजों में लगी हुई थी, जिसका कि कोई अर्थ ही नहीं है, वहां से हट करके it becomes an energy that fuels art, that fuels creativity, that fuels all the things that bring beauty in our life, that brings a lot of appreciation in our life. That when we start looking things with so much gratitude कि हे माँ, तुमने मेरे जीवन को इतना सुंदर बना के रखा है, हर पल मुझे वो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊं विद लव, विद कंपैशन. सो ऑल दैट एनर्जी गोज इन अ क्रिएटिव परस्यूट that comes with the wisdom of Matangi. And she is sitting there to make us accept all the things that we reject in our lives, all the things that we think is kind of outcasted from our lives. She is the one who was born as the daughter of Maharshi Matang. Matang ऋषि एक चांडाल, एक आउटकास्ट वर्ग के ऋषि थे. और जब हम इन डुअलिटीज को हटा करके एक इंक्लूसिवनेस लाते हैं अपने लाइफ में, वेयर अच्छा बुरा, गंदा स्वच्छ, ये प्योर इम्प्योर, लाइक डिसलाइक, इस सब से ऊपर उठ पाते हैं, दैट विजडम is Ma Matangi. And when she dawns, right from, you see, from Ma Kali to Ma Matangi, when we have allowed ourselves to go beyond fear, beyond lust, beyond our restive tendencies that bring in doubt, that don't allow us to function beyond our ego, beyond our primal urges, beyond our instinctive impulsive reactions. जब हम इन सब impurities के ऊपर देखने की क्षमता धीरे धीरे साधना द्वारा अपने अंदर प्रबल कर पाते हैं, तो प्राकट्य होता है माँ कमलात्मिका का. She is the one who comes as inner fulfillment, as abundance, as bliss, as anand, as contentment, as santosh. And then life becomes so beautiful. It is so blessed to be born
as a human being. मनुष्य योनि में जीवन मिला है रोने के लिए नहीं, सफर करने के लिए नहीं, अपनी पीड़ाओं की गांठों में बंध के उलझ करके इस पूरे जीवन का को व्यर्थ करने के लिए जीवन नहीं मिला है। जीवन को बहुत ही सुंदर ढंग से सार्थकता के साथ जी करके माँ के स्वरूप में मिल जाने के लिए मिला है, और इस की शुरुआत होती है माँ को पुकारने से, एंड दैट इज वेयर ध्यान कम्स फर्स्ट. So let's see, what is Dhyanam? The Dhyana Shlok is primarily a set of verses which are uttered to invoke the divine, to contemplate deeply upon the form of a divine entity, which is called the Saguna Swarup, to absorb that and hold that form in meditative absorption very steadily in our Chetana, in our consciousness. So Dhyanam does not mean some casual thinking or imagination. It is a meditative verse that helps a sadhak to deeply visualize, contemplate and connect with the deity. ये वो एक स्पेस है जहां पर हम अपने भाव को प्रकट करके, भाव को प्रबल करके एक बहुत ही डीप बॉन्ड बना सकते हैं अपने इष्ट के साथ. And Patanjali Yoga Sutra, which is the most authoritative classical text on this aspect, where dhyana leads to dharana and dharana leads to samadhi. Patanjali Yoga Sutra says that dhyana is that uninterrupted flow of awareness towards a single object. A mind jo hai, it throws up million thoughts and it goes in million different directions when we try to concentrate. But जब हम उसी mind को इतने सारे विचारों में भटकने के बजाय एक सिंगल पॉइंट, एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, तो जो वो अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ अवेयरनेस है, दैट इज ध्यान. एंड दिस इज अ डेफिनेशन व्हिच हैज बीन accepted across Vedanta, Tantra and Shakta traditions. So Dhyan is that which is bringing that continuity and acting as a bridge between the deity's name, form and tattva. Form is the roop. तो नाम, रूप और उनका जो तत्व है, जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं, जो जिस प्रकार का वो पूरा एक चित्रण है स्वरूप का, उसमें जो एक्ट करता है एक ब्रिज की तरह, वो श्लोक, उसको हम कहते हैं ध्यानम. एंड अगेन Patanjali Yoga Sutra says that स तु दीर्घ काले नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, meaning that which forms a firm basis for continuous reverential sustained practice executed for a long time is called dhyana. So why perform the dhyana shloka in the first place? Let me tell you a little story. There was a disciple who complained to his guru. He said, I chant thousands of mantras, but Devi never appears. And the guru says, you are sending letters every day, but you're not writing the address. How will she receive them? So the disciple asks, what is the address? And the guru says, dhyana. That is where Devi lives. So dhyana is where you are able to enliven the form that the divine takes, जो कि जागृत कर दे उस सगुण स्वरूप को जिस रूप में आप माँ को पुकार रहे हैं, वो है ध्यान. And that is why dhyana shloka is done, to build that deep bond, that deep connect, to power and nourish our bhav, because without bhav, no spiritual practice is going to yield result. So dhyana shloka is that mantric verse which is prescribing that contemplative, deep meditative absorption into the swarupam of the devata. And if you look at some of the tantric scriptures, it will say that there are four major functions that a dhyana shloka performs. It allows us to do an avahan, an invocation,
of the devata or the devi that we are calling, it allows us to align ourselves with the presence of devi. तो हम अपने आप को एकाकार कर पाएं देवी के स्वरूप के प्राकट्य से. That is what Avahan does. Sadrishya, meaning that our inner state begins to reflect the Devi's nature. It allows us to build that adhikar, to make us a worthy recipient, to make this body clean enough to hold that presence. How? By purifying the mind. So when we purify the mind and we hold the mantra, we are able to invoke her within ourselves. And this is what leads to sakshatkar pravritti, meaning to be able to experience her directly, to able to perceive and experience her presence directly, not as what the books or someone else is telling us. So it opens that path of direct experience. I would like to share a little story here before we begin to see now how to do this. And this is a story, little story from Tripura Rahasya, where sage Dattatreya is there, and एक राजा है हेमचूड़. वो जाते हैं भगवान दत्तात्रेय के पास और उनको कहते हैं कि बहुत समय के साधना के पश्चात उनके पास जाते हैं, बहुत समय का मंत्र जप उन्होंने कर लिया होता है, और जाकर के कहते हैं कि मुझे कोई दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आया, देयर इज नो विजन, नो ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ही इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड. और वो जाकर के भगवान दत्तात्रेय से पूछते हैं कि मैं क्या करूं. तो भगवान दत्तात्रेय जो हैं वो एक ही प्रश्न पूछते हैं कि डिड यू सी द देवी, क्या तुमने देवी का दर्शन किया. तो हेमचूड़ा replies that I recite the mantra exactly as you have taught me. जैसे आपने मेरे से कहा मैंने वैसा किया मंत्र जप. लेकिन फिर भगवान दत्तात्रेय जो है वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि you're chanting the names as sound, but you have not allowed her to arrive. And then he gives Hemachuda a dhyana shloka, which describes the Devi's posture, her smile, the ayudhams she's holding, and also describes the beautiful gaze of the Devi. And when Hemachuda goes back and वो इस ध्यान मंत्र को आत्मसात करते हैं, वो थोड़े समय के लिए केवल और केवल देवी का ध्यान करने में ही अपना समय बिताते हैं, जब तक कि वो ध्यान बिल्कुल उनके नेत्रों के सामने सजीव नहीं हो जाता, बिल्कुल ऐसे कि उसमें उनका सारा भाव उत्पन्न हो गया कि माँ बिल्कुल आपके सामने ही विराजमान है. उनके नेत्र सजल हो जाते हैं, सारा उनके अंदर का जितना भी प्रेम है और समर्पण है और जो भी वो अपने माँ के साथ महसूस करते हैं, that starts happening like a very very he literally drinks upon that dhyana shlokam, every little single detail. And when that happens, and then he goes back to do his mantra practice later on, he's able to see Devi standing right there in his awareness, and it completely changes his entire practice. So after a sustained practice of dhyana, she comes in this heart, simply, as if अभी तो सब अंधकार था और जैसे ही किसी ने एक दिया जला दिया हो, बिल्कुल वैसे ही माँ का प्राकट्य होता है. So that is what Dhyana Shloka does. It builds that deep bond. Now, how to do it is the question. So in the Tantra Sadhana app, we have a new secret shrine which opens only for a period of 24 hours. सिर्फ 24 घंटे के लिए ये secret shrine खुलता है नवरात्रि के समय, या फिर किसी भी और मेजर जब कोई अच्छी तिथि होती है जब हम माँ का आवाहन कर सकते हैं, केवल उन्हीं टाइम पर ये सीक्रेट श्राइन खुलता है. सो अब ये जो माघ नवरात्रि आएगी, जो कल की मौनी अमावस्या से शुरू होगा समय, जब हम प्रथम महाविद्या का आवाहन करेंगे माँ काली के स्वरूप में, ये रात के 12 बजे 18 जनवरी को सीक्रेट श्राइन खुलेगा तंत्र साधना ऐप के अंदर. In the next 4 hours, it's not very far. So in the next 4 hours, ये सेशन के बाद रात के 12 बजे, जब 18 जनवरी हो जाएगी, जो मौनी अमावस्या की शुरुआत हो जाएगी, ये
सीक्रेट श्राइन भी खुल जाएगा। और यहाँ पर हमको ध्यान करना है। अब ध्यान कैसे करना है ये समझना बहुत अनिवार्य है। हम इस सीक्रेट श्राइन के अंदर जब जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले एक मैसेज आता है वेद व्यास से। वेद व्यास जो वहां पर गुरु के रूप में विराजमान है, वही मार्गदर्शन देते हैं, और स्वामी जी की जागृत वाणी में ये सारा मार्गदर्शन हमको मिलता है। उस मार्गदर्शन को हमें सुनना है। then listen to that message first deeply. Welcome to day 3 in the secret shrine. Ma Tripura Sundari has appeared for the day. This radiant Mahavidya is the Empress, the most beautiful of all goddesses. She is the core of feminine worship. She is supreme bliss. Today, you will worship her with a verse from the Sri Lalita Trishati Stotram. Read it, absorb its meaning, and as you worship her, envision her form. She will come alive in your heart. तो यहाँ जो एक मैसेज आता है वेद व्यास जहाँ पर विराजमान है उनसे, there you have to spend some time even before we get into the practice, क्योंकि it is not about simply listening to the audio. Read the meanings that are given in that scroll down message. Spend some time, word by word, clause by clause, वो शब्द जो कि एक संस्कृत श्लोक है उनका मीनिंग क्या है वहां पर लिखा हुआ आता है। तो अति मधुर चाप हस्ताम, अति मधुर है माँ चाप हस्ता। चाप इज दैट शुगर केन बाउ दैट शी इज होल्डिंग इन हर हैंड। तो माँ के स्वरूप का गहन चिंतन करके enliven her in your mind's eye, paint that picture as described in the meaning, spend some little time. Now then when we walk up to the shrine, there you will see some visual aids inside the shrine. So go close to it, just see with that childlike curiosity, oh, what is the form that mother is showing today? So Ma jo hai, she reveals her form and the meaning of her form and the meaning of her presence to each one of us individually at a personal level as this Gupta Gyanam, deepens by calling upon her again and again. तो मात्र केवल उन श्लोकों को सुनना नहीं है, पहले मीनिंग समझना है, रीड करना है, माँ का वो चित्रण करना है अपने माइंड के अंदर जो कि वो मीनिंग बता रहा है। फिर वी गो इनसाइड द श्राइन, वहां पर माँ का बहुत ही सुंदर चित्र अवेलेबल होता है दोनों तरफ। जहां माँ विराजमान है, माँ का विग्रह है उनके दोनों तरफ। और माँ का जो उस दिन का स्वरूप है उसके बारे में थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ लिटिल डिस्क्रिप्शन ऑफ हु शी इज, हाउ शी लुक्स, वो भी अवेलेबल है। वहां एक लिटिल स्क्रोल जस्ट बिफोर वी एंटर द श्राइन, देयर इज अ लिटिल स्क्रोल। उस स्क्रोल को पढ़ें, उसके बाद प्रवेश करें श्राइन के अंदर घंटी बजा करके। सो यहाँ बिल्कुल ये भाव रखना है कि मैं एक श्राइन के अंदर हूँ जहाँ कोई नहीं है, केवल मेरी माँ है, मेरे गुरु हैं, और ये सब मेरे भीतर हो रहा है। ये श्राइन कहीं बाहर नहीं है, मेरे भीतर ही है। मेरे हृदय के गुहा में मैं माँ का आवाहन करना जा रहा हूँ और वहीं माँ प्रकट होंगी, वहीं माँ विराजमान है। So imagine she is sitting right there in front of you and you are going to deeply meditate upon that form by enliving that very description that we have read. And these are not simply some descriptions which some poet wrote or someone's mind's constructed. These dhyana shlokams are from the scriptures written by sages who have had the darshan of Divine Mother in their deep state of samadhi, in their deep state of meditative absorption, and how they beheld Mother, they have written as a dhyana shlokam, and they are at par with mantras. They are potent shlokas to enliven the very form of Divine Mother in front of us. इनमें वो क्षमता है जो माँ का दर्शन करा सके। तो इसको
ध्या करके, ध्यान जो शब्द है वो उसका मूल शब्द है ध्या। ध्या मतलब अपने चेतना के गहनतम स्तर पर वो चित्रण कर पाना, कि वो चित्र सजीव हो जाए, इट बिकम्स अलाइव। So deeply spend some time looking at those images that are there in the shrine, and then sit for your dhyanam. You can do the dhyanam for the first few chants, just focusing on the verse and its meaning. So some meanings, if it's a long dhyanam, may not come all together. Some parts of it will come, which is fine. धीरे धीरे करके जब हम उसको पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो 27 chants हैं, just focus on the meaning. Just focus on recalling that form. उस स्वरूप को अपने अति आगे। मधुर चाप हस्ताम अपरिमित आमोद बाण सौभाग्यम अरुणामतिशय करुणाम अभिनव कुल सुंदरिम वंदे। तो इस चित्रण को अपने सामने प्रकट होने दें, अपने आंख के सामने एक एक शब्द, एक जो कुछ भी कह रहा है माँ के बारे में, माँ के स्वरूप के बारे में, एंड नो दैट व्हेन वी आर सेइंग अभिनव कुल सुंदरी, अभिनव मीन्स समथिंग विच इज न्यू, कुल सुंदरी, she comes as that new nascent bud which is just beginning to bloom. Kula Sundari. Kula in Tantra means all of this description, this deeper understanding is available in that scroll that you will be able to read inside the app. Kula is this space inside the body from the Muladhara to the Sahasraram. So us kul ki swamini hai wo. She rises as that primordial Shakti of the Kundalini. So I am calling upon that mother who is beautiful, who is Saumya, who brings auspiciousness, who is holding this Ati Madhura Chapahastam, Aparimita, Amog, Amog, matlab Aparimit, infinite bliss. शी इज शावरिंग अपॉन मी। तो ये भाव रखें, जब मैं इस उच्चारण को सुन रहा हूं, अपने भीतर इस उच्चारण को प्रवाहित होने दे रहा हूं, मेरा जो पूरा शरीर है वो शरीर नहीं है, वो एक like your right ear, it has turned into your right ear in which the guru is chanting these verses. और मेरी चेतना, जितने मेरे सेंसेस हैं, all my sense organs have turned into this ear, and मेरा हर कण केवल उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। When we deeply meditate, when we drink upon this form from all our senses, she will slowly appear as that living presence. So she is not somewhere in the Chintamani Graha anymore. She's sitting right there in front of you. And this is not some imagination. This is the ability that the vibrations of the Dhyana Shloka have. They can distillate that very physical form which is being described right there, alive in front of us. That is the potency of every Dhyana Shlokam. So the first 27 times after you have done this, the next 27 times, just keep recalling this beautiful form of the Divine Mother in your inner eye with the chant. Keep recalling, keep recalling. So this is a very powerful period of time. All the other times of the year, we may just do 1 or 2 or maybe, 5 minutes of a dhyanam. But here, make use of this time, spend that time to at least invoke her 108 times. And that is a sadhana in its own self. बिकॉज जब हम स्वरूप का इतना पान कर लेते हैं कि उसकी हर एक डिटेल हमारे अंतःकरण में बिल्कुल छप जाए, तो माँ की जो एनर्जी है वो हमारे भीतर ही सजीव होना शुरू हो जाती है, जागृत होना शुरू हो जाती है। एंड दैट इज हाउ ऑल द सेजेस हैव डन ध्यानम। So gradually increase these repetitions and keep meditating on that divine form which we have read in the meaning. इसीलिए meaning पर थोड़ा pause करें, थोड़ा time spend करें, and then go into the shrine. And then you can conclude your daily chanting by praying for the well-being of everyone and offer the fruits of your dhyanam. Turn it, मन से तो हम कितना कुछ अपने मन से और इमोशन से क्रिएट कर लेते हैं, पीड़ा भी कर लेते हैं, तो एक सुंदर भाव भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही प्रबल
एक प्रैक्टिस होती है विच इज यू विल ओनली नो इट व्हेन यू डू इट। इसको अपने फल को जो भी आपने अर्जित किया है इस चैंटिंग के बाद, इस ध्यान के बाद, उसको एक अंजलि भर के फूलों के रूप में विजुअलाइज करते हुए माँ का जो लेफ्ट हैंड है उस पे समर्पित करते हैं। तो ये एक जप समर्पण की तरह है। तो माँ को जब हम अपना सारा अर्जित पुण्य अर्पित कर देते हैं तो माँ है वो उसको 100 गुना 10 गुना बहुत सारा बड़ा कर करके वापस अपने बच्चे को दे देती है। सो आई होप दैट विद दिस sweet remembrance we carry this practice not just in these few minutes that we spend doing the dhyana shlokam, but we carry it into our entire day. Be with the shloka, be with that dhyanam, be with that meditative sweet remembrance of divine mother all throughout the day. ये नहीं कि हमने एक 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 40 मिनट जो भी हमने वो ध्यान किया और उसको वहीं छोड़ दिया, ऐसा नहीं। Because sadhana has to flow into the very fabric of our lives, और तभी वो विद्या के रूप में प्रकट होंगी, ज्ञान के रूप में प्रकट होंगी हमारे जीवन में। ये माँ का ध्यान है। यदि इस ध्यान को लगाकर आप एक माला जप करेंगे या बिना किसी चिंतन के, बिना ध्यान के 100 माला जप किया, एक ही बराबर है। क्योंकि गुणवत्ता जो है वो ध्यान लगाने से ही आएगी। Swami Ji has said it all, that quality matters. And so when we deeply meditate upon her and then we call upon her, it is more potent a practice because it is powered by our own bhav. And that is what is really going to bring that result, that transformation that we are seeking through sadhana. So it requires us to commit a bit of time every single day. I will recommend that we take a sankalp as a collective sankalp, all of us as per our ability, but take a sankalp, क्योंकि जब हम संकल्प लेते हैं तो हमारी चेतना को पता होता है कि हमें ये कार्य, ये समय निकाल करके प्रतिदिन करना है, और ये हमारे विल पावर को बहुत ही प्रबल करती है। एंड कहीं पर भी पावर हो, कहीं पर भी एनर्जी हो, कहीं पर भी शक्ति हो, तो नो दैट इट इज डिवाइन मदर हु इज ऑपरेटिंग. We are not the doers in anything that happens with energy. So 27 times chant is going to take roughly about 5 to 12 minutes, depending on the length of the shloka for different Mahavidyas. And if you're chanting 108 times every day, you will need to spend 20 to 48 minutes. तो हम संकल्प ये लेंगे कि हम प्रतिदिन 108 बार मिनिमम इस ध्यान श्लोक को जपेंगे, इस ध्यान श्लोक को ध्याएंगे। इस समय पर कोई भी एक समय आप निर्धारित कर ले, 6 बजे के बाद शाम को, आफ्टर सनसेट, आप सूर्यास्त के बाद, किसी भी समय जो आप प्रतिदिन कोशिश करें कि उसी समय पे बैठे, क्योंकि जितना हम माँ के लिए उत्सुक रहते हैं, माँ से मिलने के लिए, माँ भी हमारा वेट करती हैं। सो व्हेन वी अनाउंस our resolve to the universe in a sankalp, the universe also, the universal shaktis, they wait for us to come at that time. So it's recommended that we do 108 times or more to deepen our daily dhyan and carry it forward in our entire day till we come to the next Mahavidya. And who can do this form of worship? Anybody and everybody above the age of 16, regardless of their gender, they can do this. It is, कोई भी व्यक्ति जो 16 साल से ऊपर है वो इस ध्यान को कर सकता है। आपकी दीक्षा हुई है, नहीं हुई है, आप इसके बावजूद इसको कर सकते हैं। Whether you're initiated or not, you can, it is open to all seekers. क्योंकि माँ को ध्याने के लिए कोई और आवश्यकता नहीं है, केवल आपका भाव और आपकी पुकार चाहिए। It is open to householders and homemakers. आप शादीशुदा है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, आप कोई जो कुछ भी हैं, आप ये ध्यान कर सकते हैं।
There is no restriction for menstruating or pregnant women. अगर आप गर्भवती हैं या आपके पीरियड्स हो रहे हैं, आप रजस्वला हैं, तो भी आप इस ध्यान को कर सकते हैं, क्योंकि बाहर से हमको कुछ करना ही नहीं है, ना किसी चीज को छूना है, ना कोई और कुछ करना है। हमको जहां पर भी एक स्थान पर शांति से बैठ करके अपने आसन को लगा करके ये ध्यान करना है। सो इवन इफ यू आर मेंस्ट्रुएटिंग, यू कैन डू दिस ध्यान। There are a few set of instructions, very simple ones, that need to be kept in mind. You can face north or east or northeast. आप उत्तर पूर्व या उत्तरी पूर्व दिशा में बैठ करके ये ध्यान कर सकते हैं। 6 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद, किसी भी समय जो आपको कंफर्टेबल है, आप इस ध्यान को कर सकते हैं। यू कैन वेयर रेड क्लोथ्स, आप लाल वस्त्र पहन सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, बट साफ सुथरे कपड़े पहने उतना बहुत है। There is no restriction on diet. You can have sattvic food. It will help you in the practice. आप अच्छा पौष्टिक भोजन करें, सात्विक भोजन करें इस नवरात्रि के समय में, तो आपके प्रैक्टिस को हेल्प करेगा, क्योंकि एक सीजन भी चेंज हो रहा है. सो दैट इज व्हाई पीपल वुड आल्सो फास्ट, सो दैट इट हेल्प्स डिटॉक्स द बॉडी. आप कोशिश करें कि एक ही स्थान पर, सेम स्थान पर बैठ करके सेम समय इस ध्यान को करें. और आपके पास अगर लाल आसन है, ऊन का वुलन आसन, तो यू कैन यूज दैट. इट इज नॉट मैंडेटरी, बट ट्राई एंड हैव एन आसन इफ इट इज पॉसिबल. एंड सेलिबसी इज नॉट मैंडेटरी. ब्रह्मचर्य का पालन करना यहाँ जरूरी नहीं है. आप इस साधना को केवल और केवल माँ को पुकारने की इच्छा से, बिना किसी और बाधा को रास्ते में लाए, बिना किसी और एक्सक्यूज को माइंड को क्रिएट करने दिए बिना इस साधना को करें, क्योंकि माइंड कीप्स ऑन चैटरिंग. बट जब हम संकल्प ले लेते हैं, द माइंड विल लर्न टू शट अप एंड अलाउ अस टू डू व्हाट वी हैव वाउड टू कंप्लीट. सो अगर किसी के कोई प्रश्न हो तो वी कैन टेक इट अप. Thank you, Vansiji. Just a couple of questions. So, if I understand whatever you said and took us through the session, I should, what I need to focus on while performing the Dhyan Shlok is not to simply listen to it. So, Right. step one, मीनिंग होगी आपके अंदर. सो ध्यान श्लोक क्या है? ध्यान श्लोक माँ का फॉर्म का explanation hai in a way for us to visualize her, and this is coming straight from the seers, the saints, Vasant Log, who are able to see her in that form. And now what we need to do is understand that meaning first. Once we understand the meaning, then listen to the verse from Swami Ji, who has walked the path of the Mahavidyas. And when we listen what you mentioned 27 times, हम आंखें ओपन करके we actually see the meaning. Right. and connect the what we are hearing of the Dhyan Shlok to the meaning we are reading, and then आंखें बंद करके next 27 times we will try to visualize that form, and then हम ध्यानस्थ होके we will do more of the chant, minimum of 108 times. Did I get it right, Mansi ji? If there is anything, Absolutely please. right. Absolutely right. आपने बिल्कुल सही समझा. तो फर्स्ट 27 टाइम्स हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप मीनिंग समझ करके वो चित्रण अपने माइंड में कर लें, जिससे कि आपको बिल्कुल वो स्वरूप कैसा है वो क्लियरली आपके मन में बैठ जाए. क्योंकि हमको केवल वो वर्ड्स को सुनना नहीं है. वो संस्कृत हम सबको आती है, किन्हीं को नहीं भी आती है. तो इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट दैट we only listen to it, but what is more important is we understand what it means, because that is going to fuel that visualization in our mind, that is going to fuel that picturization of mother's presence in front of us, because each dhyana shloka is going to describe her name, as we saw, her form, her attributes, her tattva, and all the way in which she is present, with maybe her posture, what is she wearing, all of that description is there. So
Whatever the Dhyana Shloka means, read that, spend some time, let it sink in, absorb that deeply, then walk into the shrine. The first 27 chants, you can say, let's say, I have 20 minutes to do this. So the first 5 minutes, just spend reading the meaning as the audio comes. And this audio, let me tell you, is in a Jagrit voice of Swami Ji. एक महाविद्या को परफेक्ट करने के लिए, सिद्धि पाने के लिए, संत sages have spent लाइफ टाइम्स, तब भी शायद हो न हो, केवल एक. और स्वामी जी ने जो साधना की है, he has walked the path where he has not just mastered one Mahavidya, he's mastered all the 10 Mahavidyas. तो एक ऐसे संत की वाणी से, एक जागृत वाणी से हम इसको, ध्यान श्लोकों को इसका श्रवण करेंगे. ये श्रवण मात्र नहीं करना है, केवल सुनना नहीं. When I said your entire body should turn into a ear, which means that you're deeply absorbing from every part of your body. You are that hungry to absorb the essence of the divine power, which is sitting here as the presence which brings that wisdom. So वो एनर्जी का फ्लो है. So एनर्जी का फ्लो जैसे एक स्पॉन्ज है, वो इट इज एब्जॉर्बिंग. पानी में डालते हैं, वो एब्जॉर्ब करता है. एक छोटा सा, मान लीजिए एक पात्र है, एक लिटिल लिटिल बॉटल दैट वी हैव, ड्रॉपर से भी धीरे 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 पानी उसमें डालेंगे तो बूंद 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 करके वो कंसंट्रेट होके वो भर जाएगा एक टाइम पर आकर के. वही होना चाहिए ध्यान श्लोक के साथ. धीरे धीरे पुनरोक्ति करते हैं. when we keep repeating, when we keep repeating, when we keep repeating in the mind, it saturates, it concentrates, it fills up that cup in the mind, where we are able to then not just picture her, she becomes a alive living presence. And how she starts operating, we will see in our own lives for an experience. But that energy finds a portal to become one with you. हम उसको आत्मसात कर लेते हैं उस ध्यान को. केवल सुनना मात्र नहीं है. So 27 times, after deeply connecting the meaning and the form and looking at those colored aids, visual aids that we have in the shrine, connect your mind with that form. Connect that mind every time we are calling upon with that little stanza of the shlok. 27 टाइम्स जब हम इसका अभ्यास कर लेते हैं, उसके नेक्स्ट 27 टाइम्स हम आंख बंद करके उसी स्वरूप को रिकॉल करते हैं, जो भी कुछ वो ध्यान श्लोक में हम कह रहे हैं माँ से, कि मैं आपके इस स्वरूप को, इस वर्णन को, उस वर्णन को सजीव करना अपने भीतर, कि मेरी चेतना में वो स्थापित हो जाए. वो उद्देश्य है इस ध्यान श्लोक का. क्योंकि जब ये स्थापित हो जाएगा और उसके बाद हम जाकर के मंत्र जप करेंगे, तो वो मंत्र जप का जो क्वालिटी है, इट विल बी कंप्लीटली एट अ डिफरेंट लेवल. क्योंकि जब हम मंत्र जप करते हैं, उस टाइम किसी स्वरूप पे चिंतन नहीं करते. उस समय केवल ध्वनि को रिकॉल करते हैं मेंटली. अक्षर बाय अक्षर वी रिकॉल द सिलेबल्स ऑफ द मंत्र. उस समय स्वरूप का कोई काम नहीं है. स्वरूप का काम यहाँ है, क्योंकि जब आपका भाव पुष्ट हो जाएगा, जब आपका बॉन्ड इतना प्रबल हो जाएगा कि माँ माँ नाम सुनने मात्र से ही वो बिल्कुल सजीव चित आपका माँ का जो है आपने ध्याया है, वो सामने प्रकट हो जाएगा. तो वो केवल एक कोई विग्रह नहीं है, कोई एंटिटी नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, कोई आइकॉन नहीं है. वो शी इज अ लिविंग प्रेजेंस राइट इन फ्रंट ऑफ यू व्हेन यू डू योर मंत्र जपा लेटर. That is what this Dhyana Shloka is going to build the base of your sadhana practice. And that is why it is so important. The next 27 times you can close your eyes and do, and the next 27 times you can again open your eyes and recall. The next 27 times you can again close your eyes. So you can alternate this practice, but try and do this 108 times, because there is no better time of the year than to invoke her at this particular period of Gupt Navratri, specifically in Magh, where we shut up the mind, go into that silent inner chamber, that silent inner secret shrine. So all these people who sometimes doubt that whether, using an app
will that bring any kind of transformation? My answer is very simple. Sadhana is not happening outside. Dhyanam is not happening outside. The app is aiding and enabling the practice so that the practice happens within. साधना भीतर हो रही है, ध्यान भीतर हो रहा है, माँ का प्राकट्य भीतर हो रहा है, वो भीतर से ही बाहर प्रकट होती हैं, वो कहीं और से नहीं आती. And she is not far. So no matter how much I say it, it is a practice of direct experience. We have to do it to feel it. So don't miss this beautiful sacred window. It is a very powerful time. Get into the practice. We have barely 3.5 hours for the secret shrine to open and the beautiful 10 powerful invocations to happen through her Dhyana Shlokam every single day. Spend this time with Mother, your Mother. एक हाथ रखें अपने मन पे, अपने हृदय पे, और एक बार पुकारें. मेरे को कोई और ध्यान श्लोक नहीं आता. मेरी माँ, मेरी माँ. You know that connect? That deep bond has to be established for Shakti to work in our lives. And that is how this Dhyana Shlokam has to be done. Thank I you. hope Thank you so I much. have been able to help a little bit understand. Absolutely, And Mansiji. Thank you so much for that. all of us, I'll request all of us who are here with us that after these 10 days, please come back, put a comment in here. Let me know how deep and immersive your practice has been after adopting, this method of deeply absorbing her attributes through the Dhyana Shlokam. Thank you. I'm really keen to know. Thank you, Mansiji. We will do that. And I think I was doing it wrong. Where I was exactly, reversed. In the Dhyana Shloka, I was listening like a mantra. And in the mantra, I was trying to see her form. So in the Dhyana Shloka, I should visualize that form as per the attributes that is told. And that will deepen my devotion and connection with Ma. We will try that for sure. One last question, Mansiji, because of the time. How to take the sankalpa and should one do it every day? हर दिन करना है या एक ही करना है, कैसे करना है? So संकल्प केवल पहले दिन लेना है जब हम अपनी 10 दिन की 10 महाविद्याओं की साधना शुरू करेंगे. First day we have to take the sankalp. कैसे लेना है? Just take a little bit of water in your hand and announce your intention to the divine universe, where you can simply say that I so and so. अपना नाम ले, अपना अगर आपके गुरु ने आपको कोई नाम दिया है वो नाम ले सकते हैं. और आपके गुरु कौन है, आपके माता पिता कौन है, आपका गोत्र क्या है, ये एक अपना एस्टैब्लिश कर दे आइडेंटिटी. दे लुक, इट्स मी टू द यूनिवर्स एंड जस्ट से वेरी सिंपली कि मैं अगले 10 दिन तक माँ के ध्यान श्लोकों का 108 बार जप करूंगा. इस whatever समय that you want to pick up, at this time every single day I will call upon the Divine Mother with her Dhyana Shloka for 108 times or 27 times or 51 times, or whatever we want to fix the number. And this is the announcement that you are doing to the universe. So you pray to the universe and say that may Divine Mother and all her attendant Shaktis help me see it through. That's it. And you can leave that water in a plate, that little bit of 2 drops of water in the plate. That's it. And this has only to be done on day 1. It doesn't need to be repeated every day. Got it, Mansiji. Thank you so much, Mansiji, for everything that you shared. And thank you so much for all of you who are here with us and listen to the today's session and are going to perform the Dhyan Sloks of Ma over the next 10 days. Anybody has any questions, please write to us, serve@tantrasadhana.app. Most of you are in a WhatsApp group. If you are not, please look at the link that our colleagues would have shared. And you can ask us any questions that you have. We will try our best to answer. And thank you for your time, for your mind share, and for what you're going to be doing in the next 10 days. Come, let's together invoke Ma and build that devotional sentiment and realize the wisdom that she is going to bestow upon us. Thank you very much.
Jai Shri Hari. Thank you, Mansi ji. Okay, Jai so Shri Hari. I will do the closing chant since I Hanji, need to. please. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Thank you, everyone. We'll see you again.